23 ઓગસ્ટે ચંદ્રયાન 3ના ચંદ્ર પર સોફ્ટ લેન્ડિંગ સાથે ભારત નવો વિક્રમ બનાવશે। આ પળને લઈને સમગ્ર દુનિયાની નજર ભારત પર છે। ચંદ્રયાન 3ની આ સફળતામાં અમદાવાદ ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકોએ ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો। ચંદ્રયાન 3માં સેક ઇસરોનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન રહ્યું છે। ચંદ્રયાન 3ની આંખ કહેવાતા અને લેન્ડિંગ બાદ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ એવા 8 કેમેરા અને રડાર અલ્ટિમેટર અમદાવાદ ઇસરોએ તૈયાર કર્યા છે। એટલું જ નહીં, ચંદ્રયાન 3ની કુલ 8 પ્રણાલીઓ પર અમદાવાદ સેક ઇસરો દ્વારા કામ કરવામાં આવ્યું છે। અમદાવાદ ઇસરો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલો એક કેમેરા પ્રજ્ઞાન રોવર પર લગાવાયો છે, જે લેન્ડિંગ બાદ સતત ચંદ્રની સપાટીનું જીવંત પ્રસારણ ઇસરોને મોકલશે। તો વિક્રમ લેન્ડરના 4 કેમેરા ડિઝાઇન કરવામાં પણ અમદાવાદ સેક ઇસરોનો મોટો ફાળો છે। ચંદ્રયાન 3ના રોવરની ડિજિટલ સિસ્ટમ અને એચડીએ પ્રોસેસરનું નિર્માણ પણ અમદાવાદ સેક ઇસરો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। ચંદ્રયાન 2 મિશન વખતે ભારતનું લેન્ડર ચંદ્ર પર ક્રેશ થઈ ગયું હતું। તેવામાં ચંદ્રયાન 3ની લેન્ડિંગ સાઇટ નક્કી કરવા પર સમગ્ર મિશનની સફળતા ટકી છે। તેવામાં લેન્ડિંગ સાઇટની પસંદગીનું 80% કામ પણ અમદાવાદ સેન્ટરે કર્યું છે। ભારતના મોટાભાગના સ્પેસ મિશન દુનિયાના દેશોના ખર્ચ કરતા ત્રીજા ભાગના ખર્ચમાં પૂર્ણ થઈ જાય છે। ઇસરો દ્વારા ખૂબ જ નજીવા ખર્ચે પાર પાડવામાં આવતા મોટા મિશન હજુ પણ દુનિયાના દેશો માટે એક કોયડો છે। ત્યારે ચંદ્રયાન 3 મિશનને અમદાવાદ ઇસરોના 700થી વધુ કર્મચારીઓ અને વૈજ્ઞાનિકોએ દિવસ રાત આકરી મહેનત કરી સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યું। તો અમદાવાદમાં ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે। ચંદ્રયાન 3ના નિર્માણમાં અમદાવાદ ઇસરોનો મહત્વપૂર્ણ ફાળો છે। દિવસ રાત એક કરીને આ ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવી છે। રોવરનો કેમેરા પણ અમદાવાદમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યો। તો 700 જેટલા કર્મચારીઓ રાત દિવસ કામ કરી રહ્યા હતા। 8 કેમેરા ચંદ્રયાન 3 માટે અમદાવાદમાં તૈયાર કરાયા છે। તો ચંદ્રયાનનું રડાર અલ્ટિમેટર પણ અમદાવાદમાં તૈયાર કરાયું। પ્રજ્ઞાન રોવર પર જે કેમેરો લગાવાયો છે તે પણ અમદાવાદ ઇસરોએ તૈયાર કર્યો છે। ચંદ્રયાન 3 છે તે લેન્ડ થવાનું છે। આપણી સાથે સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીના એડવાઇઝર અને સિનિયર વૈજ્ઞાનિક નરોત્તમ સાહુ છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। સર, બસ હવે રાહ જોવાઈ રહી છે 23 ઓગસ્ટની કે સાંજે 6 વાગે સોફ્ટ લેન્ડિંગ છે તે થશે। કેવી આશા અને કેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે? અગાઉ આપણે નિષ્ફળ રહ્યા હતા, હવે આ સફળ લેન્ડિંગ થાય તે માટેની આશા જોવાઈ રહી છે। देखिए 14 जुलाई से सारा विश्व चंद्रयान 3 का सक्सेस लैंडिंग के ऊपर में नजर डाल रहे हैं। ये लैंडिंग नॉट ओनली फॉर इंडिया के लिए एक बड़ा कदम होगा, ये पूरा विश्व के लिए, मानव जात के लिए एक जियांट स्टेप होगा, क्योंकि ये साउथ पोल में पहली बार एक सॉफ्ट लैंडिंग हो रहा है। एंड कल हम लोग जैसे देखा कि रशिया का सबसे बड़ा पावरफुल रॉकेट जो कि 10 दिन में 6 दिन में हम इनका सैटेलाइट को चंद्रमा तक पहुंच पाया, और टेक्नोलॉजी का खामी के कारण से ये लूनर ऑर्बिट तक पहुंच नहीं पाया, ताकि वहां पे उनका हार्ड क्रशिंग हुआ, जहाँ पे उनके पूरा ये हो गया, टेक्नोलॉजी फेल हो गया। तो इसी के लिए इससे ज्यादा से ज्यादा अभी टेक्नोलॉजी का भरोसा के ऊपर में, एंड हमारा लैंडर रोवर एंड हमारा ये के सैटेलाइट चंद्रयान पूरा मिशन के ऊपर में सारा वर्ल्ड का नजर रह रहे हैं। एंड हम लोग इसमें काफी आशावादी हैं, एंड हम लोग चाहते हैं कि ये सक्सेस पूरा इंडिया के लिए नहीं है, पर मानव जाति के लिए एक नया इतिहास शुरू करेगा। सर, ये चंद्रयान से क्या क्या संशोधन होगा, क्या क्या जो बात है वो बाहर निकल के आएगी, और उनके हिसाब से उससे कितना असरकारी जो कदम है वो देखिए चंद्रयान के काफी महत्वपूर्ण रोल है। पहली बार वो साउथ पोल में जा रहे हैं, इसके बाद एक सॉफ्ट लैंडिंग होगा। वहाँ पे साउथ लैंडिंग इज फुल ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल्स, तो वहाँ पे सारा मटेरियल का, इनका मिनरोलॉजी, इनका सिस्मिक वेव, इनका वातावरण, इनका एयर कंपोजिशन, इनका सॉइल, ये सारा चीज का एक पहला खोज भारत का चंद्रयान 3 मिशन देगा। तो इसी के लिए ये मिशन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी के बाद हमारा भविष्य का जो स्पेस, डीप स्पेस रिसर्च, वो डिपेंड कर रहे हैं। चंद्रयान 1 की बात की जाए तो उससे क्या जानकारी मिली थी, और उसके संबंधी चंद्रयान 3 से क्या जानकारी अब तक मिल सकेगी?
चंद्रयान 1 में हमको पहला सक्सेस दिया क्योंकि पूरा वर्ल्ड को जो नासा का सैटेलाइट नहीं बना पाया था, तो वहां से हम लोगों को तो चंद्रमा के ऊपर में आइस का जो पहाड़ है तो इसका संधान दिया था, जो एक बहुत एक क्रांतिकारी इन्वेंशन था। अब इसके बाद चंद्रयान 2 में हम लोगों का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का काफी 95 से ज्यादा हम लोग सक्सेस लिया। अभी चंद्रयान 3 में हम लोग सारा दुनिया को, सारा मानव जात को चंद्रमा का ऊपर का जो रिसर्च करने के लिए है, चंद्रमा को एक प्लेटफॉर्म तरीके से चलना है, इसके लिए हम लोगों का कैसे यूज कर सकते हैं, इसका ऊपर में वो डिपेंड करते हैं। सारा विश्व है वो भारत का चंद्रयान पर नजर रख रहा है, क्योंकि एक चंद्रयान भेजा एक देश ने, वो खत्म हो गया। अब सारी विश्व की नजर जो चंद्रयान पे है, उसको क्या दिखे? चंद्रयान हमारा सबसे ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा हमारे साथ इमोशनल अटैचमेंट है। सबसे बच्चों से शुरू करके सारा वयस्क लोगों के लिए, सब लोगों के लिए चंद्रमा का एक अलग पहचान होता है। तो इसी के लिए भारत का चंद्रयान सबके लिए एक महत्वपूर्ण, एक सक्सेसफुल रिजल्ट एंड एक भविष्य लेकर के आ रहे हैं, ताकि हम लोगों को 23 के लिए हम लोग आशावादी हैं। एंड इसके लिए हम लोग को काफी कार्यक्रम आयोजन किया है। सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक अलग अलग कार्यक्रम रहेगा। हम लोग आप लोगों को इनवाइट करते हैं, आप इसी के भागी बनिए। इतिहास, स्पेस इतिहास में भारत का चंद्रयान जैसा एक नया चैप्टर खुले, इसमें साक्षी रहिए। क्या अजय पटेल साथ गौतम श्रीमाળી, VTV, गांधीनगर।